Hello friends, so today our topic is whole numbers chapter which is given in your NCERT class 6. So first is what are whole numbers? Whole numbers क्या होते हैं ये मैंने आपको और भी वीडियोस में बताया है. What are whole numbers? Whole numbers are the numbers starting from 0. When we add 0 to the natural numbers आपको बताया था starting from 1. So when we add 0 to natural numbers, that collection is called whole numbers. So whole numbers are the numbers starting from 0 जो 0 से स्टार्ट होते हैं. और यू कैन से व्हेन वी ऐड 0 टू नेचुरल नंबर्स, जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 लाइक दिस एंड सो ऑन. बट व्हेन वी ऐड 0 टू नेचुरल नंबर्स it become whole number. So whole numbers always starts from 0. Whole means 0. So whole numbers always starts from 0. 0, 1, 2, 3 and so on. So these are whole numbers. So whole numbers always starts from 0, or we can say when we add 0 to natural numbers, they become whole numbers. Now what is addition and subtraction in whole numbers? That we will do. Addition, subtraction and multiplication in whole numbers. कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे होल नंबर्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल इज एडिशन. सपोज यू हैव गिवन 4 + 3, सो यू हैव टू डू एडिशन ऑन नंबर लाइन. सो अब आप करेंगे नंबर लाइन पे कैसे आप ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करेंगे. सो एज यू नो नंबर लाइन इंटीजर्स में भी हमने करा था. नंबर लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर फ्रॉम 0. अब यहाँ पे क्या है आपका 0 देन 1. ये आपको बताया था हर एक इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस. द डिस्टेंस इज इक्वल हियर. हर एक नंबर में आपका इक्वल डिस्टेंस है. सो इफ यू हैव टू शो दिस ऑन नंबर लाइन 4 + 3 एडिशन, सो फ्रॉम 0 you will first go to 4. So arrow will be like this. Now you have to go 3 steps forward, not backward, because it is addition. So after 4 3 steps 1 2 3. So arrow will be like this. So अब किस पे है ये arrow? Last finally 7. So 7 is your answer. It means 4 + 3 is 7. So this is your addition on number line. इस तरह का आपका addition होता है number line. Now if you have to do subtraction on number line, so how you will do? Suppose you have given a number line like this. Again you will start from 0. Suppose you have given 7 - 5. You have to calculate this subtraction on number line. Again 0 you will mark 1. इक्वल डिस्टेंस पे 2 3. ये आपका इक्वल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, पर हर एक नंबर में व्हेन यू स्टेप फॉरवर्ड द डिस्टेंस शुड बी इक्वल. सो देन 4 देन 5 देन 6 7 8 and like this. So now 7 + 7 - 5 you have to show. So first of all, on which number you will go from 0? You will go to 7. So your arrow will be like this because you going forward. Now you have to do minus. इसमें से 5 आपको लेस करना. So you will go backward from 7. How many steps? 5. 5 steps आप पीछे जाओगे 7 से. तो 1 2 3 4 5. तो 5 steps अब जब पीछे गए तो arrow should be like this. arrow इस तरह बनेगा क्योंकि अब आप कहाँ जा रहे हो, backward not forward. So अब किस स्टेप पे आएगी, 2 पे. So 2 is your answer. It means 7 - 5 is 2. So in this way you will do addition and subtraction on number line. Now we will do multiplication on number line. How we will do multiplication? Next one is multiplication on number line. Again, suppose you have to multiply 4 × 3 and you have to find out the answer.
you will again make a number line. Here you will put arrow, then 0. अब यहाँ पे फिर equal distance पे 1. ये आप स्केल से ड्रॉ करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like this you have to do. 11, like this. So then 12 and so on. Now you have to do multiplication. 4 multiply 3. What is the meaning of this? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब 4 times 3, मतलब 4 बार हमें क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है. सो 4 times 3 मतलब 4 बार हमें 3 को ऐड करते जाना है. आपका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन. सो अगर मैं 4 into 3 बोलूँ तो उसका मतलब क्या होता है? 3 को हम 4 बार प्लस करें, 4 times प्लस करें, 3 + 3 + 3 + 3, तो क्या हो जाएगा? 12. सो इट मीन्स हमको 3 को कितनी बार शो करना है? 4 times. 3 स्टेप हमें 4 times जाना है. तो पहले हम 3 पे गए, 0 से 3 स्टेप गए, 1 स्टेप, देन उसके बाद अगेन 1 2 3, अगेन हमें 4 times जाना. अभी ये 2 times हुआ है. देन अगेन 1 2 3, देन 9 से अगेन 1 2 3. तो ये 1 2 3 4, तो 4 बार हमें 3 स्टेप्स करने थे. तो 4 बार जब हमने 3 स्टेप्स करे तो हमारा आंसर क्या है? वी गेट 12. सो 12 इज एन आंसर. So in this way you will do multiplication of whole numbers. Now let's see properties of whole numbers. We have done addition, we have done subtraction, we have done multiplication. Now we will do properties of whole numbers. So now what are properties of whole numbers? Like same way जैसे आपने last class में करा था rational numbers का भी, integers का भी same properties of whole numbers. Properties of whole numbers. So first one is closure property. So first one is closure property. What is closure property? It is also again 4 heads: addition, subtraction, multiplication and division. तो अब यहाँ पे क्या है? एडिशन में आपको बताया था, if we add 2 whole numbers, 2 + 3 suppose, so answer is 5. So this is also whole number, but so it is true under addition. But if we subtract 2 whole numbers, suppose if I subtract 2 - 3, इन्हीं 2 whole numbers को ले लो तो क्या आएगा? -1. But -1 is not a whole number, it is an integer, so it is not true under subtraction. सब्ट्रैक्शन के अंदर ये ट्रू नहीं है. नाउ मल्टीप्लीकेशन, 2 × 3. अब 2 होल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर इज 6. होल नंबर ही आ रहा है. 2 × 3 6, तो 2 होल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो होल नंबर ही मिलता है. सो इट इज ट्रू अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो. बट अगेन if we divide 2 divided by 3, so it become fraction. It is not a whole number, so it is not true under division. ये division के अंदर true नहीं है, so it is not true under division. So it means your closure property is true under only addition and multiplication, not under subtraction and division. So closure property are true under addition and multiplication. Now next one is commutative. Again you will take 2 whole numbers. Second property is commutative property. First one was closure, now commutative property. So again in commutative, if we add 2 whole numbers in any order, suppose अगर हम 3 and 5, 3 + 5, or we can say 5 + 3, answer is same 8 in both the cases. दोनों ही केसेस में 8 आएगा. So it is true under addition, but again subtraction में यही होगा. 3 - 5 is -2, but it is not equal to 5 - 3, which is 2.
सो यहाँ पे क्या आ गया, साइन का डिफरेंस आ गया ना, ये नेगेटिव नंबर हो गया, ये पॉजिटिव नंबर हो गया. सो इट इज़ नॉट ट्रू अंडर सब्ट्रैक्शन. अगेन अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लें 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3, it is 15 in both the cases. So again it is same. So but in division also it will become fraction, it will not solve. 3 upon 5 will be different answer and 5 upon 3 will be different answer. So it is not true again. So like closure property, जैसे closure property में था true under addition and multiplication, इसी तरह commutative property में भी किस में true है, सिर्फ addition और multiplication में. बाकी और में भी जब आपने integers में पढ़ा था उसमें पढ़ा था तो तब भी ऐसे ही था. Now associative, again in associative also it will be true under only addition and multiplication. subtraction में और division में ये true नहीं होगा. associative में यहाँ पे आपने 2 whole numbers लिए, there you will take 3 whole numbers in associative property. third one is associative property. Here if you take 3 होल नंबर्स 2, 3, 5, तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, आंसर विल बी सेम 2 प्लस 3 प्लस 5, और इफ वी टेक 2 प्लस 3 इन ब्रैकेट एंड देन प्लस 5, इन बोथ द केसेस इट विल बी 10. सो इट इज ट्रू अंडर एडिशन. नाउ इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो द आंसर विल बी डिफरेंट, सो इट इज नॉट ट्रू अंडर सब्ट्रैक्शन. बट इन मल्टीप्लीकेशन you can multiply in any order. 2 into 3, then you multiply 5, तो क्या आएगा, 2 3 is 6, 6 into 5 is 30. If you take 2 outside and 3 into 5 in bracket, 3 5 is 15, so 2 into 15 is again 30. So it is 2 under again in multiplication. Again in division fraction will be same, so different, so answer will be different. So it is not true under division. So again in associative property it is true under only addition and multiplication, like closure property and commutative property. Now fourth one is distributive property. Distributive property again over of multiplication over addition and subtraction. A into b plus c and a into b minus c. So again this distributive property is true under only addition and multiplication, sorry, addition and subtraction over multiplication. So here if we take 2 3 5, so 2 into 3 plus 5, we can say 5 plus 3 is 8, so 2 into 8 is 16. Now if we take here 2 into b minus c, so b minus c is 5 minus 3, so 5 minus 3 is 2, 2 multiplied by 2 is 4. So whole number in distributive property, this is distributive property, this is distributive property. So in distributive property over addition and distributive property of multiplication over addition and over subtraction, this is your distributive property. Now next one is same additive identity and multiplicative identity. Additive identity थी क्या था, 0 is called the additive identity. If we multiply, sorry, if we add any number to the 0, we will get the same whole number. So that is additive identity. 0 is called the additive identity of whole numbers. If we add 0 to any whole number or 0 to any whole number, the answer will be whole number. अगर आपको 10 दे रखा है, सपोज होल नंबर 10 plus 0 is equal to 0 plus 10, that is 10. तो अगर आप 0 में कोई होल नंबर ऐड करो या होल नंबर में 0 ऐड करो तो आंसर विल बी द सेम होल नंबर. सो 0 क्या कहलाता है आपका, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स एंड 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव. 1 क्यों कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज कॉल्ड multiplicative
identity of whole numbers. Why 1 is called? Because if you multiply whole number by 1 or 1 by whole number, you will get the same whole number. अब इसी 10 को ले लो आप, 10 into 1 और 1 into 10, आंसर विल बी 10. तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो या 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी द सेम होल नंबर. सो 1 is called the multiplicative identity of whole numbers and 0 is called the additive identity of whole. So what properties we studied? Closure property, commutative property, associative property, distributive property of multiplication over addition, subtraction. 0 is called additive identity. We studied about additive identity. Then multiplicative identity. 1 is called the multiplicative. So these are the properties of whole numbers. So what are whole numbers? Then how we will do addition, subtraction and multiplication on whole numbers on number line, and then properties of whole numbers. I hope you understand this whole numbers through this video. Please like, share and comment, and also if you have any query, please write in comment box. Thank you.